Good evening to everybody. Jai Hind, Dr. Jain, Satya, good to see you here also. Lion King, Alam, okay, good Alam to see you again and hear from you again. Navdeep, then Nitya. So I think we are good to go for today's discussion. So yes, guys, spot diagnosis. Rheumat is a lot of questions that are asked in this topic of rheumatology. They are like based on antibodies, but then some of them can be a spot diagnosis as well. So let's look at the inputs that you guys would be providing to me for the current question at this on the screen at the moment. Yes, guys, waiting for maybe the chat part is a little delayed, but then anyways. Okay, so I'm getting a C there. Hi, Dr. Vaishali. For psoriatic arthritis, यार psoriatic arthritis में फिर थोड़े changes nails में होने चाहिए थे ना. I mean, C would be an unlikely perspective. I'm still getting C as a feed. Dr. Ramya, very good evening. अगर मैं इसको सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलूँगा तो सोरियाटिक आर्थराइटिस के लिए नेल्स में चेंजेस होने चाहिए एंड देन यू वुड बी हैविंग स्पेशली इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डीआईपी बट दिस इज सिंपली अ हैंड ऑफ अ ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के जो हैंड्स होते हैं ना 75-80 ईयर्स की एज पे उस पे कुसुम जय श्री राम वी वुड बी हैविंग दीज व्हाट आर कॉल्ड एज हिबिड्रन नोड्स एंड बाउचर्ड नोड्स which you can see at the DIP and the PIP of the patient as well. So therefore the diagnosis in this particular case will become much more easier. I think gouty arthritis तो बनता नहीं है क्योंकि gouty arthritis तो फिर पाँव की इन्वॉल्वमेंट होती है ना. तो gouty arthritis में तो पोडोलैजिया होता है, पोडोग्रा होता है, सेलुलाइटिस की जैसी प्रेजेंटेशन होती है. तो A आपका सीधा बाहर हो गया. और सोरियाटिक आर्थराइटिस के लिए मैंने बोला कि सोरियासिस के फाइंडिंग कुछ तो दिखने चाहिए ना, स्किन चेंजेस दिखना चाहिए या फिर नेल्स में चेंजेस होने चाहिए. तो यहाँ पे नेल्स में भी कोई चेंजेस नहीं है एंड मोर एवर बोथ डीआईपी एज वेल एज पीआईपी इज इन्वॉल्व. सो मोस्ट ऑफ द टाइम सोरियाटिक आर्थराइटिस कॉजेज ओनली डीआईपी इन्वॉल्वमेंट. प्लस एक और पॉइंट जो कि सोरियाटिक आर्थराइटिस को रूल आउट करता है, इसकी जो उसमें फिंगर्स होती हैं वो स्वोलन और थिकंड होती हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सॉसेज डिजिट्स. तो यहाँ पे तो वो जो फिंगर्स का अपीयरेंस है वो सॉसेज डिजिट्स वाला भी नहीं है. सो दैट्स अगेन अ पॉइंट अगेंस्ट द डायग्नोसिस ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस. प्लस देयर आर नो नेल चेंजेस प्रेजेंट. सो आई विल रिपीट द फैक्ट्स वंस अगेन. क्यों इसका आंसर सी क्यों नहीं बनता? क्योंकि अगर ये सोरियाटिक आर्थराइटिस होता तो एक्सक्लूसिव डीआईपी की इन्वॉल्वमेंट होती, इसमें सॉसेज डिजिट्स प्रेजेंट होते, देन नो नेल चेंजेस विजिबल इन दिस पर्टिकुलर केस पर से. सो ऑल दीज पॉइंट्स रूल आउट पर से. इसमें जो दिखाई दे रहा है दैट इज वेरी क्लासिकल फाइंडिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि ओल्ड एज में मिलता है. हाँ जी, लायन किंग यू राइट, पेंसिल इन अ कप डिफॉर्मिटी इज अ फीचर दैट इज सीन विद सोरियाटिक आर्थराइटिस. आपको जो इस क्वेश्चन में पकड़ना था दैट मोस्ट गाइस हैव पिक्ड अप सब्सिक्वेंटली, दैट इज हिबिड्रन्स नोड्स एंड डॉक्टर जैन बोलो बोलो, आज डाउट्स ही सॉल्व करने हैं मुझे. सो दैट वुड बी हिबिड्रन नोड्स एंड बाउचर्ड्स नोड्स पर से. जो हिबिड्रन होगा वो डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट के साथ में होगा और जो बाउचर्ड नोड्स होगा वो प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट के साथ में होगा. सो दैट इज व्हाई द डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट वुड बी रिलेटिवली इजी. डॉक्टर जैन ने बोला कि एसएलई डिफॉर्मेटिव नहीं बोलते, इरोजिव बोलते हैं या नॉन इरोजिव बोलते हैं. तो 90% केसेस जो होते हैं वो नॉन इरोजिव होते हैं, 10% केसेस में इरोजन्स होते हैं. मैं डेटा लिख रहा हूँ, हैरिसन में चेक कर लेना. एसएलई का जो फीचर होता है वो इंटरमिटेंट पॉलीआर्थराइटिस होता है. वो इंटरमिटेंट पॉलीआर्थराइटिस मतलब हाथ के छोटे जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है, रिस्ट जॉइंट में हो सकता है, नी जॉइंट में भी प्रेजेंट हो सकता है. एसएलई के पेशेंट्स में 10% जो केसेस होते हैं उनमें इरोजन्स होते हैं और बाकी जो केसेस होते हैं वो नॉन इरोसिव आर्थराइटिस के होते हैं. तो ऐसा कोई भी डिसऑर्डर नहीं होता जो प्योरली, मोस्टली जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें तो इरोजन्स होंगे ही होंगे, लेकिन एज सच एसएलई के केस में मेजॉरिटी जो केसेस हैं दैट वुड बी 90% केसेस नॉन इरोसिव और 10% केसेस इरोसिव आर्थराइटिस. इरोसिव का मतलब ये होता है कि डिफॉर्मिटीज बन जाएगी. सो आई थिंक वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. एंड या इरोजिव मैंने बताया ना, 90% केसेस में इरोजिव है और 10% केसेस में 90% में नॉन इरोजिव है और 10% केसेस में इरोजिव आर्थराइटिस है. हाँ जी, जैकूट्स आर्थ्रोपैथी, एग्जैक्टली. जैकूट्स जो वर्ड है ना वो बेसिकली रूमेटिक के लिए यूज होता है, दैट इरोजन्स दैट वुड कम. Okay, ji, fine. So we are sorted for this question. The answer to the first question for today is option number B. Lakshmi, very good evening.
And as far as the other deformities are concerned, they are relatively easier to pick up. You can pick up the swan neck deformity also. This would be characterized by extension at the proximal interphalangeal and flexion at the distal interphalangeal joint. And then boutonniere's deformity will be ulta of that, where you will be getting a flexion and then extension. So ulta हो गया boutonniere's deformity. अगर आप swan neck deformity पढ़ लेते हो तो boutonniere को सिर्फ आपने रिवर्स करके पढ़ना है, and this should not be mixed up with mallet finger. Mallet finger में जो deformity होगी उसमें जो PIP होगा न्यूट्रल पोजीशन पे होगा और DIP में फ्लेक्शन प्रेजेंट होगी. And then we also have what is called as a Z-line deformity. तो ये जो ऊपर वाली तीन images हैं, they are very features that are seen with rheumatoid arthritis, और Hib-Bedrant's nodes and Bouchard's nodes are a feature that are seen with osteoarthritis. तो usually in the exam, I mean, one question is asked on the topic of arthritis, and that is the reason why we are, always gonna be, we have to remember that. Hi Ravi, very good evening. मॉर्निंग मेडिको सेज रेनॉल्ड्स फिनोमेनन एसएलई में होता है, स्क्लेरोडर्मा में होता है, दोनों में होता है यार. ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना कि रेनॉल्ड्स फिनोमेनन किसी भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में हो सकता है. इस इंप्रेशन में नहीं पढ़ना है कि हाँ जी अल्नर डिविएशन इज सीन इन रोमेटॉइड आर्थराइटिस. इनफैक्ट रोमेटॉइड आर्थराइटिस में तो इवन वी कैन हैव दैट पियानो की मूवमेंट ऑफ द अल्नर स्टाइलॉइड. एक बड़ा पेक्यूलियर सा एमसीक्यू बोल रहा हूँ बिकॉज देर वुड बी डैमेज एट द रिस्ट जॉइंट. तो जो अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस है उसकी मूवमेंट फ्री मूवमेंट हो जाती है जैसे पियानो की मूवमेंट. सो दैट्स अगेन अ फीचर दैट यू कैन रिमेंबर. एंड आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर. आरपी जो है रेनॉल्ड्स फिनोमेनन दैट कैन बी सीन विद एनी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर. ऐसा कोई प्रेडिक्टिव रूल नहीं है कि यू कैन सी इट ओनली विद एसएलई और यू कैन सी इट विद स्क्लेरोडर्मा. तो अभी तो रूमैट में जो डायग्नोसिस है वो एंटीबॉडी बेस्ड होता है. Okay, Ji. So we are sorted for the first question. The spot diagnosis was Hib-Bedrant's nodes and Bouchard nodes, which are seen on the DIP and the PIP respectively. And now we move on to the second question for today. Yes, Jake, that's a good input from you. The Z-line deformity will be having subluxation of the first metacarpophalangeal joint with an extension at the interphalangeal joint. This is a case of a young lady. She's having complaints of discoloration of the skin of the upper eyelids and difficulty in climbing stairs as well. So the examiner is basically trying to point out towards presence of a heliotrope rash, which would be a violaceous or hi Dr. Stone, good to hear from you. This would be a rash which is gonna be purplish in color. It would be seen on the upper eyelid, though it can be seen even on the ears of the patient. It can be seen on the V of the neck, it can be seen on the back. You read about V sign and shawl sign. So heliotrope rash is present in the description, plus there is difficulty in climbing stairs as well. I'm getting A as an answer. Polymyositis होगा तो फिर डर्मेट मैनिफेस्टेशन थोड़ी ना होगी. गाइस आंसर इज नॉट ऑप्शन नंबर ए. अगर ये ऑप्शन नंबर ए होता तो फिर उसमें डर्मा के मैनिफेस्टेशन तो नहीं होते ना. गाइस आंसर इज नॉट ए. डोंट रश इनटू द आंसर. अभी तो मैंने पूरा एक्सप्लेन भी नहीं किया था बट आप जल्दबाजी में आंसर कर रहे हो. यंग लेडी प्रेजेंट्स विद कंप्लेंट्स और डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ऑफ द अपर eyelid, मतलब डर्मा के फीचर हो गए ना. तो फिर क्वेश्चन का आंसर पॉलीमायोसाइटिस तो हो नहीं सकता है क्योंकि पॉलीमायोसाइटिस में तो डर्मा मैनिफेस्टेशन होती ही नहीं है, फिर डर्मेटोमायोसाइटिस है. Plus this lady is also having fever that is off and on with skin tightening and contractures of both the hands. तो इसमें क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं? इसमें हीलियोट्रोप रैश दे रखा है, मायोसाइटिस दे रखा है, मायोसाइटिस के साथ में इवन सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के स्क्लेरोडर्मा के फीचर दे रखे हैं बिकॉज स्किन टाइटनिंग इज अ फीचर that you see with scleroderma and there is contractures also because skin के नीचे fibrosis हो जाता है. So there is dermatomyositis present in this case and dermatomyositis के साथ में systemic sclerosis के features हैं. Plus because of the myositis component the CPK mm of this patient is elevated and the muscle biopsy shows a perimyosial atrophy. So that is a feature because the inflammation of the muscle will contribute to this. आई एम स्टिल गेटिंग बी एज एन आंसर. तो मैंने समझाया था यार सिली मिस्टेक्स मत करो. अभी भी मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए बिना एंटीबॉडी के, क्या आप U1 RNP एंटीबॉडी के बिना क्या मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर बोल सकते हो? I mean, can you diagnose mixed connective tissue disorder without the presence of U1 RNP antibody? The answer is a big no. The answer is not A. Why? Because dermatomyositis hai. It is not mixed connective tissue disorder because U1 RNP antibody is present and this is not scleroderma. This would be solved by exclusion, guys. This would be overlap syndrome. I think at this particular point of time,
I am dealing majority with those doctors who are gonna be sitting for the forthcoming NEET PG exam, and you have to solve questions on the basis of exclusion, and that exclusion capability is what you need to practice. क्योंकि मतलब ये जो पहला वाला सवाल है ये तो चलो ठीक है यार, मतलब स्पॉट डायग्नोसिस इज लाइक ज़्यादा हिस्ट्री नहीं दे रखी है तो यू नो आप बोल सकते हो कि सर गलती हो गई, मतलब जल्दबाजी में सोरियाटिक आर्थराइटिस बोल दिया. But for this one, you have to apply logic, and the answer for this point should be remembered for this. Moonchild, you don't need to be negative and point out here. This is an academic session, so you can keep it academic only. And if you are not interested in academic sense, there is no point of just posting just without any reason. Okay, so whatever it is, you take it out with them, not on this forum. Okay. द बेसिक कॉन्सेप्ट इज ओवरलैप सिंड्रोम होता क्या है. तो ओवरलैप सिंड्रोम इज कॉम्बिनेशन ऑफ डर्मेटोमायोसाइटिस. मतलब आपको ये दोनों डिफरेंसेस समझने हैं कि ओवरलैप सिंड्रोम और मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है. तो ओवरलैप सिंड्रोम का बेसिक मतलब ये होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईदर ऑफ द टू, डर्मेटोमायोसाइटिस एंड पॉलीमायोसाइटिस विद एनी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर. वो कोई सा भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो उसको ओवरलैप सिंड्रोम बोलते हैं. और मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर को हम तब बोलते हैं जब U1 RNP एंटीबॉडी प्रेजेंट हो. Okay, I got a question from Itifkar saying that why this is not scleroderma. तो यार scleroderma में CPK MM elevated नहीं होगा ना. स्क्लेरोडर्मा में मसल बायोप्सी में पेरीमायोसिल अट्रोफी नहीं होती है, क्योंकि स्क्लेरोडर्मा जो डिजीज है उसमें मसल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ना, बिकॉज दिस डिजीज इज हैविंग मसल इन्वॉल्वमेंट. दैट इज व्हाई आई मीन स्क्लेरोडर्मा में और भी फीचर्स होते हैं, लाइक दे कुड बी स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस, दे कैन बी रीनल इन्वॉल्वमेंट, दे कैन बी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन. दैट्स आई मीन ऑल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट कैन बी सीन. एंड देन स्क्लेरोडर्मा के डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विदाउट एंटी टोपोआइसोमरस एंटीबॉडी you cannot say a diagnosis per se for presence of scleroderma, plus you don't have a muscle involvement in this case. Okay, morning medico says how to differentiate dermatomyositis from polymyositis. So let us do that simple activity कि differentiate कैसे करेंगे dermatomyositis को और polymyositis को. तो dermatomyositis पे तो dermatological manifestations होंगे. तो वो डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होंगे. डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे दैट्स गोना बी लाइक शॉल साइन, दैट्स गोना बी लाइक लीजन्स ऑन द बैक ऑफ द पेशेंट ऑन द शोल्डर्स. देन देयर वुड बी वी साइन प्रेजेंट. तो देयर वुड बी रेडनेस एंड दैट वुड बी अ एरिथेमेटस रैश. जैसे प्लेग्रा में रैश मिलती है वी ऑफ द नेक में, वैसी ही रैश मिलेगी, बट उसके साथ साथ में मायोसाइटिस भी प्रेजेंट होगा. सो इफ यू आर गेटिंग डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस जो अभी मैंने मेंशन किए, दैट इज शॉल साइन, वी साइन, हेलियोट्रोप रैश, दैट्स अ फीचर ऑफ डर्मेटोमायोसाइटिस. पॉलीमायोसाइटिस विल बी हैविंग ओनली मसल इन्वॉल्वमेंट. बोथ ऑफ दीज में कॉमन फीचर क्या होगा, इन बोथ ऑफ देम द कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मसल्स, एंड दैट वुड बी प्रॉक्सिमल मसल इन्वॉल्वमेंट. दैट प्रॉक्सिमल मसल इन्वॉल्वमेंट से होगा क्या, दैट पर्सन विल बी हैविंग डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स. वो जैसे सीढ़ी पे क्लाइंब करना है या चेयर से उठना है, या वॉशरूम गया पेशेंट और उसको वॉशरूम से वॉशरूम यूज करके उसने चेयर से उठना है, उस टाइम पे प्रॉक्सिमल मसल इन्वॉल्वमेंट होगी और मसल वीकनेस प्रेजेंट होगी. तो मायोसाइटिस इज अ कॉमन थिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम. Myositis is a common feature for both of them, but then the difference between the two will be one, the presence of skin manifestations in dermatomyositis. दोनों ही disorders में malignancy का जो risk होगा वो increase होगा. Malignancy risk is more for dermatomyositis. जैसे both of them are gonna be female patients, so ovarian cancer का जो risk है वो dermatomyositis में और polymyositis दोनों में increase होता है, पर dermatomyositis में relatively more होता है. And now guys, especially those of you who are gonna be sitting for ENICET exam और NEET PG exam, तो मेरा बात ध्यान से सुनना, क्योंकि integrated questions आते हैं. तो सबसे important point, दोनों को जो differentiate करने में help करता है dermatositis और myositis को muscle biopsy की finding है. वो मसल बायोप्सी की फाइंडिंग क्या है जो आपने समझनी है, वो ये है कि अभी जो मैं, एंड कीप योर आइज ऑन द स्क्रीन एट द मोमेंट गाइस एंड लिसन टू द वर्ड्स दैट आई से. ये जो इंडिविजुअल मसल फाइबर्स होते हैं, इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं एंडोमायोसियम. यहाँ पे जो फाइंडिंग लिखी हुई है उसको बोलते हैं एंडोमायोसियम. एंड आई मीन दिस होल पिंकिश जो राउंड वाला एरिया है वो मसल फाइबर हो गया, एंडोमायोसियम हो गया. और आप देखो ये जो I'll use a different color to represent this particular area that I'm showing in black at the moment, जो बाहर की तरफ है, ये जो बाहर वाला एरिया है, this is what is called as पेरीमाइसियम. तो
when it comes to dermatomyositis and polymyositis, जो सबसे important differentiating feature है, suppose clinical history is not given in the question, he just gives you a slide, सिर्फ उसने इतना slide दे रखा है और वो आपको बोलता है कि भाई pick up whether it is gonna be polymyositis or dermatomyositis, you will differentiate कैसे. आप देख रहे हो ये जो green वाला area है, उस ग्रीन वाले एरिया के आसपास में you can see deposits, that is blue deposits, that is inflammation present. So अगर endomyosil inflammation present है तो endomyosil inflammation is a feature that is seen with respect to polymyositis. ऑन द अदर हैंड अगर पेरीमाइसियम की इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है तो पेरीमाइसियम की जो इन्फ्लेमेशन है दैट इज अ फीचर दैट इज सीन विद रिस्पेक्ट टू डर्मेटोमायोसाइटिस. सो अगर वो स्लाइड के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा तो ऑब्वियसली आई मीन स्किन मैनिफेस्टेशन, वेरी राइटली यू सेड जेक दैट यू डोंट हैव अ स्किन मैनिफेस्टेशन विद polymyositis, you have skin manifestation only with dermatomyositis. But even if they do not give that in the exam and they give you a muscle biopsy की finding, so from integrated pathology perspective अगर endomyosil inflammation प्रेजेंट है, एज यू कैन सी दिस इज एंडोमायोसिस, उसके आसपास में ये डिपॉजिट्स दिखाई दे रहे हैं ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स. आई मीन दिस इज लो पावर, राइट? सो फॉर हाई पावर आई कांट से एट द मोमेंट वेदर इट इज अ मोनोन्यूक्लियर सेल और इट्स अ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल. फॉर मी ऑल द ब्लू डिपॉजिट्स वुड बेसिकली बी lymphocytic deposits only, that is inflammatory cells. So yeah Jan, you can't pick up कि ये CD4 सेल है या CD8 सेल है, उसके लिए तो स्पेशल स्टडीज वुड बी डन बाय पैथोलॉजिस्ट. बट अगर मुझे ये स्लाइड दी जाए और मुझसे पूछा जाए कि भाई पॉलीमायोसाइटिस या dermatomyositis, agar I get endomyosil inflammation I will say polymyositis. If it is perimysium involvement then I'll say dermatomyositis. And as I explained already that you know if you are having that clinical information given, अगर वो heliotrope rash दे देता है, अगर वो standard V sign और बाकी सारे issues बोल देता है, then it will become relatively easier for you. Yes Lion King, you are perfectly right, and दोनों में ही steroids and azathioprine will be used. So perfect I mean interpretations I got from you. This question that I've discussed before you is the one जिसमें सबसे ज़्यादा errors की possibility रहती है. The learning point for you guys is dermatomyositis and polymyositis with any connective tissue disorder is called as overlap syndrome. और mixed connective tissue disorder के लिए U1 RNP के साथ में कम से कम 2 connective tissue disorder होने चाहिए. वो कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो सकते हैं मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के साथ में? दैट कैन बी एसएलई, दैट कैन बी सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, इट कैन बी पॉलीमायोसाइटिस, इट कैन बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो एमसीटीडी को एग्जाम में बिना U1 आरएनपी के आंसर नहीं करना, और ओवरलैप सिंड्रोम को आपने DM/PM मतलब डर्मेटोमायोसाइटिस एंड पॉलीमायोसाइटिस विद एनी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के बेसिस पे आंसर करना है. दीज आर 2 बेसिक पॉइंट्स व्हिच आर स्टिल टू बी रिमेंबर्ड. ओके, ईशान सेज yeah, they'll not give you a slide, doctor. I mean, they would not give you a slide alone. They'll give up the clinical information as well. So I don't think so that they'll make it so difficult by giving you just a plain slide. Okay, ji. Let's move on to the next one. This time he says that this young lady is having discoloration of the fingertips on cold exposure. So this would be Raynaud's phenomenon. And then वो आगे बोलता है कि there is fever off and on and a pink malar rash with tenderness on the cervical spine on examination, hands are puffy and is having contractures. तो malar rash is a feature that is seen with SLE, and then he's also talking about contractures which are present in the hands with puffiness, that is for systemic sclerosis. And because in this particular case there is U1 RNP antibody, considering U1 RNP antibody, then in those circumstances only when he mentions U1 RNP antibody that you will be answering this as mixed connective tissue disorder. So the answer for this one is C. And no doc, now this is not overlap syndrome. That is what I wanted to point out. This is not overlap, because overlap syndrome क्या होता है, फिर से practice कर लेते हैं. Overlap syndrome would be combination of dermatomyositis or polymyositis with any connective tissue disorder. In contrast, for MCTD, the minimum requirement would be presence of U1 RNP with at least 2 connective tissue disorders, and इसमें तो तीन दे रखे हैं. That is gonna be like SLE, Raynaud's phenomenon, systemic sclerosis. So on the basis of the data that I have provided to you, I think that those confusing terms can be solved out. Good. Now you guys are getting a hang of it. अरे बड़ा simple है यार. Rheumat वाला जो topic है ना, it is made out to be like you know a little tough one. It is a very simple one in a sense that you just need to get the basic algorithms right, and then everything will fall into place. Great, Lakshmi. Moving to the next one, he says which of the following clinical criteria would be having maximum weightage for diagnosis of systemic lupus erythematosus? I'm giving you guys a couple of seconds to just think about it. Yes, Iftikhar, you're right. Rishi, you perfectly right for this one. Okay.
The question talks about clinical criteria with maximum weightage for diagnosis of lupus erythematosus. Waiting for comments in this case, because if I start talking more, then the answers will become very, very obvious. Yes, guys. Okay. Okay, I'm getting a B, I'm getting a C. तो skin manifestations majority लोग बोल रहे हैं. Now I'm getting lupus nephritis as the input there also. So let's look at the voting. Majority of guys are in favor of, I can say it's equally divided. I mean A, B, C ही चल रहा है. So nobody for D, autoimmune hemolytic anemia. Yes, SJ, you have a great point there, but I just wanted these guys to realize. देखो, right when I have started the topic of SL ना, तो मैंने lupus foundation का जो brand ambassador है उसकी मैंने बात करी है. That is Selena Gomez, that pop singer, the one who's responsible for that song Calm Down. So Selena Gomez का जो example मैंने आपको बोला है, वो उसमें मैंने ये बोला है कि she was suffering from SLE that went undiagnosed and then she suffered from lupus nephritis. आई मीन लूपस नेफ्राइटिस अगर हो गया तो मतलब इट इज अ गारंटी दैट it is a diagnostic feature for SLE, because what this question is based on that ACR EULAR 2019 criteria. And if you listen to the discussion of this criteria, उसमें मैंने main जो point बोली है कि each system involvement is given a few points and the maximum weightage would be for lupus nephritis. बेंटली आप किस रिकॉल की बात कर रहे हैं, सो प्लीज मेंशन द एग्जाम पर से. एंड ओ ग्रेट मनीष, थैंक यू फॉर एंड कंग्रेचुलेशंस इन फैक्ट फॉर getting MD radio diagnosis. Do mention the institute where you're working in case you are comfortable with, and that would motivate a lot of people who are in this particular chat to get motivated and then study accordingly. So it's good news. हाँ जी, हाँ जी. लूपस नेफ्राइटिस विल बी गिवन टोटल ऑफ 10 पॉइंट्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एंड इसको याद रखने का तरीका वही मैंने बोला कि सेलेना गोमेज को लूपस नेफ्राइटिस हुआ, तो मतलब दैट इज लाइक वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स विच आर टू बी रिमेंबर्ड. ओके जी, इसमें आपने जो मेन क्लासेस याद करने हैं ना, वो करने हैं 3, 4, 5, बिकॉज क्लिनिशियन के परस्पेक्टिव से हम 3, 4, 5 को ही ट्रीट करते हैं. और आपको जो याद करना होता है वो FDM है. जैसे FD में पैसे डालते हैं मनी के लिए ना, FD में मनी मल्टीप्लाई करने के लिए, तो F से हो जाता है फोकल लूपस नेफ्राइटिस, D से हो जाता है डिफ्यूज फोकल नेफ्राइटिस, और M से जो हो जाएगा दैट इज गोना बी आई मीन मेम्ब्रेनस लूपस नेफ्राइटिस. तो FDM याद कर लेना. और एज अ आई मीन जो क्लिनिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा वो क्वेश्चन यही होगा कि भाई ट्रीटमेंट किसको देना है, ट्रीटमेंट किस में देना है. तो इट इज गोना बी क्लास 3, 4, 5. देयर आर टोटल ऑफ 6 क्लासेस विच आर लाइक 1 से लेके 6 तक. तो क्लास 1 देन 2 एंड 6 में ट्रीटमेंट नहीं करते. 6 तो बर्नट आउट डिजीज हो गया. 6 इज बर्नट आउट डिजीज, दैट इज एंड स्टेज रेनल डिजीज. एंड 1 एंड 2 में ओनली mesangial changes would be present, so there is no need for treatment with respect to 1 and 2. The treatment is done only for 3, 4, 5. And yes, morning medicos, that is what I'm trying to explain. मैंने बोला FDM याद कर लेना. जैसे FD में पैसे डालते हैं मनी जब जरूरत हो तो निकालने के लिए, फोकल, डिफ्यूज और मेम्ब्रेनस. एंड इट इज 4 विच विल बी हैविंग दैट क्लासिकल वायर लूप लीजन्स प्रेजेंट. एंड आपने मुझे बताना है व्हाट इज द ट्रीटमेंट दैट इज गिवन फॉर लूपस नेफ्राइटिस, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है. तो आप क्या दवाई लिखोगे, मतलब स्टेरॉइड मत बोलना, वो तो देते ही देते हैं, लेकिन मेन ट्रीटमेंट लूपस नेफ्राइटिस के लिए क्या होती है. एंड फॉर क्लास 6 वी डू नॉट गिव ट्रीटमेंट. This is the aspect, guys. We do not, there is no treatment given for class 1 to 6. Treatment is given for 3, 4, 5. That's where the manifestations are developing. And yes guys, what drug would you give for treatment here? Waiting for you in the comment box here for the drugs used. तो क्या देंगे, तो स्टेरॉइड्स तो देते ही देते हैं, लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट है वो स्टेरॉइड्स नहीं है. दैट वुड बी माइकोफिनोलेट. यस, 1 and 2 में ट्रीटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. देयर इज नो ट्रीटमेंट डन. यस यस यस, 1 and 2 ट्रीटमेंट इज नॉट डन. इवन 6 में भी ट्रीटमेंट नहीं देते. इवन 6 में भी मैंने बोला वी विल नॉट बी गिविंग ट्रीटमेंट. दैट इज द रीजन फॉर दैट इज आई मीन ताकि वो आगे जाए ना. बट 6 इज बर्नट आउट, सो देयर इज नो ट्रीटमेंट अगेन रिक्वायर्ड. और ट्रीटमेंट क्या देते हैं, तो माइकोफिनोलेट एंड कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स देंगे. कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर वुड बी लाइक टैकोरोलिमस व्हिच वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द केस. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन नंबर A. And it is the ACR 2019 criteria from where this question has been picked up with respect to the maximum weightage. Yes, so that it would not progress to 6.
Photosensitivity and malar rash are important features, but then dermat manifestation is not the commonest manifestation. It's musculoskeletal and kidney involvement, which is the most important one. I think we are sorted for this question. The answer is A, clinical criteria having maximum weightage for diagnosis. And somebody mentioned कि ये biopsy की finding है, वो ठीक है यार, it's a biopsy finding, but still it is included in the clinical criteria because we have clinical criteria and laboratory criteria for diagnosis. And the final score of the patient, चलो आप लोग comment करो, according to the ACR criteria, total score of the patient should be more than how much to say that it is SLE? Total score of the patient should be more than how much to say it is diagnosis of SLE. Yes guys, waiting for you in the comment box. Total score in EULAR ACR criteria, European and American College of Rheumat का जो क्लासिफिकेशन है उसमें टोटल स्कोर के वैल्यू कितने से ज़्यादा हो कि हम SLE का डायग्नोसिस बोलते हैं. The total score should be more than 10 for entry and maximum score वैसे भी lupus nephritis alone is sufficient for diagnosis. ये अकेला ही 10 पॉइंट टोटल पता कहता है. एसएलई का डायग्नोसिस कब बोलते हैं? एसएलई का डायग्नोसिस बोलते हैं जब टोटल 10 पॉइंट्स पेशेंट स्कोर करे. तो अगर लूपस नेफ्राइटिस है तो अलोन दैट इज सफिशिएंट फॉर मेकिंग अ डायग्नोसिस. So I did not get much answers in the comment there, but anyway, this is the table that I'm talking about. Renal biopsy would be having maximum weightage, and this is discussed in the routine section in the app and in the rapid revision as well. Okay, ji. Moving on to the next one, he says which of the following is a leading presentation of Takayasu's arteritis? Takayasu नाम तो Japanese है, but manifestations Indian patients में मिलते हैं. So let's look at what you guys are saying for this particular question. Options are ranging from arm claudication to renal artery stenosis, livedo reticularis. In fact, livedo reticularis would be that fishnet appearance of the skin because of dilation of blood vessels. These are dilated vessels in the skin where the fishnet appearance would come up. We'll look at the manifestations of fishnet also. Yes guys, waiting for your comments here. Leading presentation of Takayasu's arteritis. Then we can have digital ulcers also. मतलब मैं आगे कुछ भी बोलूँगा तो diagnosis clear हो जाता है, इसलिए I am waiting for you guys to comment here. And जो logic यहाँ पर लगाना है वो यही है कि Takayasu's arteritis जो disease है उसमें subclavian vessels involved होती हैं. और क्योंकि सबक्लेवियन वेसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, मोस्टली जो सबसे कॉमन ब्लड वेसल इन्वॉल्व होती है वो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है. और जहाँ से आर्टरी शुरू होती है उसका एरिया नैरो हो जाता है, उसको ऑस्टियल नैरोइंग बोलते हैं. तो क्योंकि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की नैरोइंग हो रही है तो देयर वुड बी अ डेवलपमेंट ऑफ वैस्कुलर क्लॉडिकेशन डेवलपिंग इन दिस पेशेंट. तो टाकायासुस आर्टेराइटिस की जो ओवरऑल सबसे कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है दैट वुड बी आंसर्ड बाय यू एज आर्म क्लॉडिकेशन. बाकी मिलने को तो इवन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कैन डेवलप बिकॉज देयर वुड बी ऑस्टियल नैरोइंग, बिकॉज देयर वुड बी ऑस्टियल नैरोइंग ऑफ there would be ostial narrowing of the renal artery also. So renal artery stenosis can also develop. That's okay, but the characteristic manifestation of pulseless disease would be arm claudication. A lot of these patients may initially go to an orthopedician. उन्हें ये लग रहा है कि भाई orthopedician के पास गए हैं क्योंकि बाजू में पेन होता है जब भी वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं. तो उन्हें लग रहा होता है कि भाई मे बी दिस इज एन ऑर्थोपेडिक इशू, बट MRI spine of these patients would be perfectly normal. And okay, there is a delay in the chat session. Okay ji, fine. So Divya Jyoti ka comment was the very first one that I could see, probably some delay in the chat, but anyway, the main highlight of the disease, I'll say once again कि pulseless disease की जो सबसे common manifestation होगी that would be arm claudication, and that would be a vascular claudication that would be occurring here because हमें neurogenic claudication से differentiate करना है. And to differentiate from the neurogenic claudication, what we need to do is to differentiate neurogenic, we need to do a MRI of the cervical spine, and the MRI of the cervical spine will be perfectly normal in this case. So answer for this one turns out to be A. Unequal BP in both arms is also one of the manifestations of this condition. Exactly. I mean that is one of the manifestations. In fact, unequal BP. Traditionally हम पढ़ते हैं unequal BP between left and right arms with coarctation of aorta, the preductal variety. But then unequal BP between left and right arms can be seen with multiple conditions. Supravalvular aortic stenosis is one of them. They love to ask about it. And then is the current topic of interest, that would be Takayasu. Then is gonna be
even coarctation of aorta of the preductal variety. So thank you, Doc, for the wishes, and I think we are sorted for this one. Livedo reticularis कौन कौन से डिजीज में पढ़ते हो? Yes guys, let's just check out the chat section. आप मुझे बताओ कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें आप लिवेडो रेटिकुलरिस पढ़ रहे होते हैं. यस, aortic dissection में acute onset होगा ना. That Shushma, you're right. Aortic dissection would be a acute onset manifestation. बाकी जो है these are long term manifestations. So yeah, your point is well taken. If there is aortic dissection, again there would be unequal BP, but then that would be an acute onset manifestation as compared to the previous ones which are long acting. Very good. I am getting that in polyarthritis nodosa. और बोलो polyarthritis nodosa के सिवा और livedo reticularis आप कौन से disease में पढ़ते हो? And the hint is that this is a extra hepatic manifestation for hepatitis C. Yes, yes, yes. Okay, drugs can be causing it. Amantadine. Okay, okay. So one important yeah, livedo reticularis is seen with medical diseases की बात करें, it can be seen with polyarthritis nodosa, that is one, and then is a condition which is a extrahepatic manifestation of hepatitis C, that is essential cryoglobulinemia. That's another aspect where you need to have livedo reticularis. Okay, I mean rheumatic conditions may or may not be associated. We're talking about ones which are common ones, no? So it's gonna be livedo reticularis is a feature with polyarthritis nodosa, then essential cryoglobulinemia. Absolutely, absolutely. I was waiting for this. Alam came up with the right answer. Antiphospholipid antibody syndrome. क्योंकि चाहे वो primary antiphospholipid हो, चाहे वो secondary antiphospholipid syndrome हो, that is where it can be seen. So these are like some of the very common causes for development of this. And yeah, alcoholic liver disease. Okay, but then alcoholic liver disease के साथ में और बड़े सारे stigmata present होते हैं, so it would not be a very characteristic one. But yeah, drugs like amantadine can be responsible for contributing to it. Amantadine is routinely used for management of levodopa induced dyskinesias. Absolutely, if they are essential cryoglobulinemia, antiphospholipid, ये जो top 3 है ना, ये mostly exam में मतलब ये 3 सुनना चाहता है वो. Polyarthritis nodosa, cryoglobulinemia, antiphospholipid syndrome are the important ones which he needs to remember. Absolutely, Panchal, you're right. APS bolo, APLA bolo, antiphospholipid antibody syndrome. Yeah, rheumatoid arthritis too. Yes, but उनके साथ में बाकी और सारे जो manifestations हैं, they are like more likely to be asked. Okay, जी. We can move on to the next question. The answer to this one is option number A. And this image is for anyway livedo reticularis, the fishnet appearance that I was talking about, seen in pan and essential cryoglobulinemia. Let's move on to the next question for today. Extra-articular manifestation of rheumatoid arthritis. The leading one would be rheumatoid nodules. The commonest one is rheumatoid nodules, which are seen over Achilles tendon or over the extensor, or would be seen on the elbows, on the extensor aspect of the hands. Yep, you're right. Distal ulcers can be a complication. Okay. Which of the following is distal ulcer is a complication of thromboangiitis obliterans? Yeah, Burgess disease, Lion King. You're right. The next one says which of the following is not a feature of systemic lupus erythematosus? Yes. Yeah. Dr. SJ, atherombotic kidney disease can be having it again. That I can add. AEKD, atherombotic kidney disease. That would be most of the time seen post angioplasty, atherombotic kidney disease. That can result in that manifestations of livedo reticularis, plus they can be distal gangrene as well. Okay, not a manifestation of SLE would be answered by you as malar flush, because malar flush is what you encounter with mitral stenosis. The remaining features are perfectly fine. We do get a serositis, we get transverse myelitis also, myelopathy can be seen, spinal cord involvement can be seen in SLE. I mean, from the CNS manifestations, no, when we read about lupus, lupus can cause neuronal involvement, so it can cause cerebritis, but at the same time, it is also capable of causing a spinal cord involvement as well. So myelopathy can be seen, peripheral nerve involvement can be seen, cranial nerve involvement, individual cranial nerve involvement can be seen because सबके ऊपर myelin है. तो lupus can contribute to CNS manifestations, including development of seizures as well. Yes, malar flush would be seen with mitral stenosis. We are sorted for this question. The answer is B. Serositis मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा pleuritis and pericarditis, which are important diagnostic features to be remembered for SLE. Then leukopenia would also be seen, lymphopenia, क्योंकि जो auto antibodies हैं वो white blood cells को भी damage कर देते हैं. Right, we get lupus pericarditis. So the correct answer for this one is option number B.
Okay, we are moving to a relatively easier one. The question says, what is the commonest manifestation of SLE? Yes, guys, you can keep the comments coming. What do you think is the leading presentation? Mucocutaneous, which would mean manifestations of skin, photosensitivity, malar rash, neuropsychiatric manifestations where they can be depression or psychosis, constitutional symptoms, and then can be musculoskeletal as well. So I'm waiting for your answers. Yep, there is a leukothrombopenia. Why not Malar? Why not Malar? Okay, somebody said Malar flush ना तो Malar rash होती है ना Malar flush नहीं होता. It's a Malar rash. It's not a Malar flush. Malar flush is a feature of mitrostenosis. Okay. नो डॉक्टर इट वुड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स तो जो सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन होती है दैट इज म्यूकोक्यूटेनियस आ रहा है मुझे आंसर नो गाइज यू आर अगेन मेकिंग अ सिली मिस्टेक ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है दैट जो सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन होती है दैट इज गोना बी मस्कुलोस्केलेटल इन्वॉल्वमेंट the leading manifestation in SLE. That's the table, the reference from Harrison. You can see the percentage involvement there, and you can see that in majority of cases it would be joint involvement that is seen in about 90% of cases. So the commonest is musculoskeletal involvement. Mucocutaneous भी है, लेकिन the percentage is lesser ना. I mean, agreed that there is a non-scarring alopecia, there are oral ulcers, that's okay. But then musculoskeletal involvement is overall the most common one. Yes, arthritis and synovitis are the features that are present. और musculoskeletal में भी होगा क्या तो उसको synovitis होगा. कई cases में arthritis भी हो सकता है. It would be a intermittent arthritis. I mean the question can mention और ये मतलब इसमें usually कौन कौन से joints involved हो सकते हैं. So patient can be having involvement of the small joints of the hands also. I mean this lady when she'll come to you, she'll say that I have fever off and on, plus she is complaining of pain in the small joints of the hand. Tenderness can be present in the small joints of the hand, but then at the same time the pain will also be described in the knee joint. ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के आप ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस की बात कर रहा है, बट रोमेटॉइड अर्थराइटिस में then having a knee joint involvement is little unlikely, and that will also be asymmetrical involvement. Like if she will tell about small joint की tenderness on the left hand side, you will notice tenderness in the small joints of the hand on the left. It may not be present on right, जबकि रोमेटॉइड अर्थराइटिस में वो हमेशा bilaterally symmetrical होता है. RA is a bilaterally symmetrical involvement. In SLE, it could be a asymmetrical involvement of the small joints as well as of the large joints. So there is a possibility that when he will write the data, the way he will write female patient small joint involvement with tenderness, you can be thinking in terms of rheumatoid arthritis, but then as I explained, it would not be symmetrical. There would be no mention of morning stiffness for more than 1 hour, and the blood work will also be different. Exactly, Murunal. This would be a non-erosive damage that would be seen. The answer to this one is D. I would rate that as a silly mistake in case you made it. No issues, मतलब गलतियां तो होती रहती हैं, but then you need to remember that. Then anti-nuclear antibody जो है, that is one of the main tests that is useful for diagnosis of SLE. I mean, you cannot diagnose SLE without anti-nuclear antibody, and thereby we always read this word entry-level criteria. I mean, according to the latest 2019 criteria, entry level criterion for diagnosis of SLE would be anti-nuclear antibody values more than 1 by 80 by immunofluorescence, but then you can be having them even in S-Sjögren syndrome, you can be having them in systemic sclerosis as well. So do remember the fact that this is a textbook classical table from the textbook जिससे उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है that anti-nuclear antibody will be strongly positive in all of the following conditions, except then your answer would be given as Wegener's granulomatosis where the chances would be relatively lesser. Absolutely. तो टाइप ऑफ अनीमिया जो होगा आलम दैट वुड बी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक. जो मेन रीजन है अनीमिया का, एक तो क्रॉनिक डिजीज है और क्रॉनिक के साथ में ऑटोइम्यूनिटी भी प्रेजेंट है. सो द मोस्ट सेंसिटिव, आलम ऑलरेडी आंसर्ड यू, इट इज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया. एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी वुड बी प्रेजेंट विद all of the following that is described there, but then at the same time is unlikely to be present with respect to granulomatosis. ओके, एमडी सोप क्राइटेरिया. हाँ ठीक है, वो एमडी सोप की जगह पे एक और भी मैंने बताया सोनार, है ना. सोनार चलो मैं लिख देता हूँ फटाफट से तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. उसका शॉर्ट एंड सिंपलर ना, सोनार में एस से साइनोवाइटिस हो जाता है और एस से सीरोसाइटिस भी हो जाता है. आप अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैं सोनार की फुल फॉर्म लिख रहा हूँ. एस से साइनोवाइटिस है, देन कैन बी सीरोसाइटिस डेवलपिंग इन दिस पेशेंट्स. सीरोसाइटिस मतलब प्लूराइटिस और पेरिकार्डाइटिस इनमें डेवलप हो जाएगा. Then can be oral aphthous ulcers,
It can be nasal ulcers as well. Then can be non-scarring alopecia. Do remember that fact, non-scarring alopecia, derma में भी इसको पूछा जाता है. Then neurological features can develop. That could be lupus erythematosus, autoimmune hemolytic anemia. Radiological features and renal involvement can be seen as well. So sonar is another way to remember features of SLE instead of remembering that long MD. So for डॉक्टर इफ्तिकार वी यूज स्क्रीनिंग के लिए फॉर स्क्लेरोडर्मा एंटी न्यूक्लियर. देखो हम तो टेस्ट लिखते हैं ऑटोइम्यून पैनल. ऑटोइम्यून पैनल में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी भी करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी करते हैं. तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी विल बी पॉजिटिव इन स्क्लेरोडर्मा केसेस ऑल्सो, बट देन यू कैनॉट से इट इज स्क्लेरोडर्मा बिकॉज यू नीड क्लिनिकल फीचर्स ऑल्सो एंड यू नीड प्रेजेंस ऑफ एंटी टोपोइसोमरेस एंटीबॉडी एज वेल. ओके, लीडिंग कार्डियक प्रेजेंटेशन ऑफ एसएलई, मुझे अलग अलग आंसर्स मिले यहाँ पर. द आंसर इज नॉट ए गाइस. लिबमेंस-एक्स एंडोकार्डाइटिस इज नॉट द लीडिंग कार्डियक प्रेजेंटेशन ऑफ एसएलई. द लीडिंग कार्डियक प्रेजेंटेशन इज पेरिकार्डाइटिस. इट इज नॉट लिबमेंस-एक्स एंडोकार्डाइटिस. एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस होता है. दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी. इफ अ लेडी विद एसएलई विल सर्वाइव एंड बियॉन्ड 45 इयर्स ऑफ एज, द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस. एंड वैसे भी देखो ना, उसको रीनल डिजीज तो होना ही होना है. जैसे मैंने सेलिना गोमेज का एग्जांपल दिया, तो जिसको रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है उनको तो वैसे भी, I mean, renal involvement is anyway gonna be associated with development of accelerated atherosclerosis. So the main message per se is that accelerated atherosclerosis is one of the reasons for development of death in these patients. The number one cardiac presentation of systemic lupus erythematosus is pericardial involvement. It is pericarditis. In fact, ये serositis में ये दो चीजें ही पढ़ाते हैं. एक प्लूराइटिस होता है और एक पेरिकार्डाइटिस होता है. तो मैंने ये मेंशन भी किया हुआ है मोस्ट कॉमन और लीस्ट कॉमन लंग मैनिफेस्टेशन के फॉर्मेट में, दैट द लिबमेंस-एक्स एंडोकार्डाइटिस गाइस इज अ रेयर फाइंडिंग. इट्स नॉट अ वेरी कॉमन फाइंडिंग. दैट वेजिटेशंस दैट आर स्टेराइल वेजिटेशंस ऑन द inferior surface of the hearts, no, this is going to be sterile vegetations on the inferior surface of the heart valves. So these sterile vegetations are present on any surface of the heart valve, mainly the inferior surface, but that would be a relatively rare manifestation. The leading cardiac presentation of SLE is pericarditis. Textbook reference here, pericarditis is most common cardiac manifestation. Okay ji. Coming to the next one, which of the following is not a feature of Takayasu's arteritis? So we have spoken about this disease which causes involvement of blood vessels that come out from the arch of the aorta. And I would like you guys to comment in this case, what do you think would be described as not a feature of Takayasu's arteritis? Yes, guys. पेरिकार्डाइटिस, अरे वो तो टेक्स्ट बुक रेफरेंस. चलो अब आपने कमेंट किया तो मैं दिखा रहा हूँ ना, हैरिसन का स्नैपशॉट है. आपने बोला पैथो में लिबमेंस-एक्स एंडो, वो भाई इसलिए बताते हैं पैथो में लिबमेंस-एक्स एंडोकार्डाइटिस क्योंकि वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. उन्हें वेजिटेशंस बताने होते हैं ना कि वेजिटेशंस की लोकेशन क्या होती है. एंड दीज आर स्टेराइल वेजिटेशंस. इनमें प्लेटलेट्स होंगे, फाइब्रिन होगा, बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होगा. तो वो क्योंकि लिबमेंस-एक्स एंडोकार्डाइटिस बार बार बताते हैं, दैट इज वाई इंप्रेशन यही जाता है कि द कॉमनेस्ट कार्डियक मैनिफेस्टेशन ऑफ एसएलई इज लिबमेंस-एक्स, जबकि ऐसा नहीं है. So it's gonna be the commonest one is pericarditis. Shreyansh, it's a good idea. Cardiac manifestations or cardiac lesions. What I'll do is I'll make a list of that and then we'll discuss it. Otherwise, बड़ा random सा हो जाएगा. तो सारे rheumat के ना, once I take up another session on cardiovascular, what I'll do is I'll write down all the rheumat ones और उनके cardiovascular manifestations will be discussed. So that's the reference here, guys. Takayasu's arteritis में क्या होता है? तो pathologically speaking, this disease has pan-arteritis. All layers of the blood vessels are involved. Because there is a ostial narrowing present. So ostial narrowing की वजह से there can be a development of stenotic lesion, so that is okay. और कहीं पर भी अगर stenotic lesions होता है तो pre stenosis there can be aneurysm formation as well. Guys, the correct answer for this particular question is option number D. Carotid artery dissection नहीं होगा ना, carotid artery narrowing होगा. It is not carotid artery dissection. Carotid artery dissection कब मिलता है? वो तो hypertension के साथ मिलता है. कैरोटिड आर्टरी डिसेक्शन कब मिलता है? वो तो हाइपरटेंशन के साथ में मिलता है. एनोरिज्म का मैंने लॉजिक बताया कि कभी भी कहीं पर भी स्टेनोसिस हो जाए तो प्री स्टेनोटिक जो है, कहीं पर भी अगर देयर इज गोना बी अ लीजन प्रेजेंट, प्री स्टेनोटिक लीजन जब भी होता है
तो प्री स्टेनोटिक एरियाज में हमेशा एन्यूरिज्म प्रेजेंट होता है। कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ना, यू कैन रिमेंबर दिस एज लाइक कि कोई ट्यूब है, उस ट्यूब को अगर आप दबा दोगे, इफ देयर इज गोना बी लाइक अ नैरोइंग प्रेजेंट, यू नो, इफ आई से देयर इज अ ट्यूब लाइक दिस एंड यू आर ट्राइंग टू नैरो इट और स्क्वीज इट, so जो pre-stenotic area है, that pre-stenotic area will gradually start bulging out. So I'll just modify the diagram here to say that this is what I'm trying to say, that wherever there would be a stenosis, there would be a pre-stenotic dilatation as well. The correct answer for this one is option number D. We're gonna do a quick recap of this MCQ. Takayasu's arteritis is pulseless disease which would be characterized by pan-arteritis. All the layer of the blood vessels would be involved. One of the commonest blood vessels that is involved in this condition is left subclavian artery. उसका जो orifice होता है जहाँ से artery start होती है उसकी narrowing हो जाती है, जिसे हम ostial narrowing बोलते हैं। और जहाँ पे भी narrowing present होगी तो narrowing से just पहले वाला जो area है pre-stenotic dilatation would be present, and that is what he means by the word aneurysm formation in the blood vessel. The answer for this would be option number D, that is carotid artery dissection. तो ये वाला जो सवाल है, this is more based on logic, मतलब थोड़ा इसमें ना ऊपर नीचे आंसर हो सकता है। तो अगर इसमें सपोज यू गॉट दिस वन रॉन्ग, तो आई अंडरस्टैंड, यू नो, कि मतलब दिस इसी को रिफाइन करना है। आई मीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस सेशंस इज दैट यू नीड टू रिफाइन योर थॉट प्रोसेस बिकॉज क्वेश्चंस मे नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। द प्रीवियस क्वेश्चन वाज लाइक स्ट्रेट टेक्स्ट बुक रेफरेंस, a leading cardiac presentation of SLE. So a large number of questions in the exam are gonna be fact based, but some of them are gonna be based on your exclusion capability. तो आपने दोनों को build up करना। फैक्ट्स तो मतलब फैक्ट्स कैन नेवर गो जीरो सर, मतलब इस क्वेश्चन के लिए यू कैन नेवर मेक एन एक्सक्यूज कि भाई आप ये कहो कि पैथो में ऐसा बताया है, वो इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है कि लिम्बस एक्स एंडोकार्डिटिस वो एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट दे लव टू आस्क इन पैथोलॉजी, बट दैट डजंट मीन इट्स द कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन. आई शोड द टेक्स्ट बुक रेफरेंस फॉर द सेम. एंड देन is pan-arteritis of Takayasu per se, जिसमें there would not be any significant cellular infiltrate present. Aortic dissection, शुक्ला साहब, हाइपरटेंशन में होता है ना, हाई बीपी में ब्लड वेसल की वॉल में टीयर आ जाता है. Takayasu's arteritis में luminal narrowing हो रही है, as you can see, and there's a uniform, I mean, you know, pinkness present in the slide, but यहाँ पर आपको basically mononuclear cell infiltrate दिखाई दे रहा है. So because there is a cellular infiltrate and at the same time there is a narrowing of the blood vessel, so this would not be Takayasu's arteritis, this would be rather giant cell arteritis. Now for giant cells to be visualized, I need to obviously go in a high power view of the same, but if they give you a cut section of a blood vessel, अगर वो खुद ही blood vessel का I mean मेंशन कर देता है कि कौन सी ब्लड वेसल है, if he says that it is auriculotemporal artery, superficial temporal artery, फिर तो easy हो जाता है, that biopsy specimen of superficial temporal artery is given. But if you are noticing that there is a cellular infiltrate present, then it is giant cell arteritis. If you are not seeing it, it is devoid of a cellular infiltrate, then it would be answered as Takayasu's arteritis. If he mentions blood vessels, then it becomes easy. Libman-Sachs endocarditis में कोई ट्रीटमेंट नहीं करते सर. Libman-Sachs endocarditis में, I mean you guys love reading Libman-Sachs endocarditis. This particular condition in Libman-Sachs endocarditis would be having vegetations which can be involving any surface of the heart valve, but predominantly vegetations can be involving the inferior surface of the heart valves, and these would be sterile vegetations. If they are not causing any problems, like suppose person is asymptomatic, then there is absolutely no treatment required. But if it is symptomatic, suppose the commonest valvular lesion that is seen is mitral regurgitation, then valve repair needs to be done. So if it is symptomatic mitral regurgitation, then in those circumstances we need to go in for treatment. That would be a valve repair or a valvuloplasty, but asymptomatic would not require any treatment per se. Okay. Moving to the next one, this is again a topic which they love to ask in the exam, that a child has presented with blotchy rash on the legs and the back and buttocks. Very classical blotchy rash on the legs and the back and the buttocks. That is a feature that's called as extensor purpura. I did not want to say that statement because the moment I say that, the diagnosis becomes very obvious, but still. Yup, Alam, you're right for that fibrinoid necrosis. There is an extensor purpura which is described in this question, and if I say anything more, then the issue becomes, I mean मैं diagnosis ही बोल दूंगा तो फिर point नहीं रहेगा discussion का. Yes guys, रैश है लेग्स पे है, बैक पे, बटक्स पे, और वो एक्सेप्ट करके सवाल पूछ रहा है, तो पहले तो हम डायग्नोसिस लिख लेते हैं. द डायग्नोसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर गाय वुड बी HSP, दैट इज हेनॉक्स कॉलिन पर्प्यूरा.
विच इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए मीडिएटेड वास्कुलाइटिस। और वो ये पूछ रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर केस में HSP के मरीज में कौन सी चीज नहीं होगी। इट्स एन एक्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। यस गाइस, क्रॉप्स ऑफ पैल्पेबल परप्यूरा तो हमें दिखाई दे ही रहा है, और इम्यूनोग्लोबुलिन ए मीडिएटेड डिसऑर्डर है। थोड़ा डायग्राम भी इस तरीके से बना हुआ है कि उससे आंसर तो निकल ही रहा है। It is a disorder where there would be blood vessel damage, small vessel vasculitis, स्किन की blood vessels affected हो रही है ना, तो स्किन की blood vessels affected होने की वजह से परप्यूरा के manifestations आ रहे हैं। And then this disease can involve the kidney as well, so they can be gut की involvement भी हो सकती है, so they could be hematochezia, they could be fresh blood in the stool, abdominal pain, and they can be even renal involvement also that can contribute to hematuria. The main presentation of this condition is कि इसको बोलते हैं non thrombocytopenic purpura। इस बीमारी की खासियत ये होती है कि इसमें जो परप्यूरा होता है, जो स्किन पे ब्लीड है, वो इज नॉट बिकॉज अ लो प्लेटलेट काउंट बट इट इज IgA मीडिएटेड डैमेज टू द ब्लड वेसल्स। सो बिकॉज हेनॉक्सकॉलिन परप्यूरा को नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा पैथोलॉजी में बताते हैं, सो दैट फीचर हैज टू बी पिक्ड अप बाय यू दैट नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा इज गोना बी सीन विद is a feature that is seen with this condition, that is platelet count normal मिलेगा। और इस सवाल में वो कह रहा है कि जो प्लेटलेट काउंट है वो लेस लिखा हुआ है, सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। प्लेटलेट काउंट विल बी लेस विद द पेशेंट्स हु आर हैविंग HUS, दैट इज हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। जो होता है, जो HUS होता है, उसमें ITP में और TTP में तो डिफरेंस सर रीनल इन्वॉल्वमेंट का हो जाएगा ना। ITP में तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ पेटिक्यूर और परप्यूरे मिलेंगे, लेकिन TTP में तो स्ट्रोक के मैनिफेस्टेशंस भी आ जाएंगे, रीनल इन्वॉल्वमेंट भी आ जाएगी। तो ओके, एंटीबॉडीज ऑफ डर्मेटोमाय, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, यू नीड टू रिमेंबर एंटीबॉडीज ऑफ डर्मेटोमायोसाइटिस। इनफैक्ट मैं पीछे वाली स्लाइड में मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन पूछा कि डू वी नीड टू रिमेंबर एंटीबॉडीज फॉर डर्मेटोमायोसाइटिस। बिल्कुल याद करना है सर। द एंटीबॉडीज फॉर डर्मेटोमायोसाइटिस वुड बी लाइक anti-MI2, anti-TIF, anti-TIF। MI2 मतलब मिशन इम्पॉसिबल नहीं, बट anti-TIF एंटीबॉडी। सो आई मीन दीज नेम्स हैव टू बी रिमेंबर्ड गाइस, जो एंटीबॉडीज होती हैं। ट्रांसक्रिप्शन इंटरमीडियरी फैक्टर या MI2 एंटीबॉडी, NXP2 एंटीबॉडी। So those antibodies for dermatomyositis, though that is not the best way for diagnosis, Ishan, the best way for diagnosis would be a MRI guided muscle biopsy, which helps in diagnosis. Yes, MSA5 also, MDA5, right? Melanoma differentiation antigen, MDA5. Those antibodies are good ones to be remembered. Absolutely, yes. Okay जी, coming back to the original question, anti-Jo antibody should be primarily asked for anti-synthetase syndrome। जो anti-Jo1 antibody है ना, इसका overlap है। anti-Jo1 antibody actually दोनों में मिलती है, लेकिन आपने जो एग्जाम में आंसर करके आना है वो है anti-synthetase syndrome। anti-Jo1 antibody का फर्स्ट आंसर इज anti-synthetase syndrome। I have put up a question on anti-synthetase syndrome as well, जहाँ पे interstitial lung disease के साथ में एसोसिएशन होता है। Okay, great, Jalaram Chaudhary. Good to see you here, even after finishing the FMG exam. If you're joining here, hats off to your dedication. The correct answer for this one is option number D. And somebody mentioned regarding anti-Jo1, so I've clarified the specific answer for anti-Jo1 antibody should be answered as anti-synthetase syndrome. Manifestations of anti-synthetase syndrome will be discussed in the subsequent question. Why platelets are reduced in dengue and not RBC? Because जो antibodies होती हैं they are gonna contribute to damage to the platelets। तो platelets जो होते हैं उनका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो why platelets are reduced and not RBC? क्योंकि वो RBC को डैमेज नहीं कर रही ना। ब्लीडिंग लाइफ थ्रेटनिंग अगर हो गई बहुत ज़्यादा, तब तो हेमोग्लोबिन फॉल करेगा, बट हेमोग्लोबिन फॉल करने से पहले हेमाटोक्रेट के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सो इट इज़ हेमाटोक्रेट that is gonna be affected, and it's gonna be platelet count that is affected in dengue. Mechanics hands is one of the, actually Panchal, I did not want to say that word mechanic hands right now because that is one of the question that will be put up subsequently. PSGN for differential diagnosis may, for this question, PSGN may, then there should be history of renal failure, right? I mean, there, if I say that I'm going to keep PSGN in the differential diagnosis, then I should mention regarding hypertension, I should mention regarding oliguria, I should mention regarding C3 being lesser, I should mention regarding antibodies by the name of anti-DNase B antibody. So since none of that information is given, PSGN is not to be kept in the differentials. Enoxaparin papura में वैसे भी the values of
I mean, in henox-colon purpura, you will be noticing that the values of C3 would be normal. Yes, Panchal, you're right. There would be non-erosive arthritis, ILD, Raynaud's in dermatomyositis. Okay, dermatomyositis may not be a constant feature, but yeah, remaining things would be there. Majority would be ILD, Raynaud's, and non-erosive arthritis. Okay, moving to the next one, hemorrhagic synovial fluid on a joint aspiration. So it's more of a miscellaneous kind of a question, but let's see if you guys are able to pick it up. हाँ जी, सोर थ्रोट का हिस्ट्री ना हमेशा एलिसिटेबल नहीं होता क्योंकि इट विल अकर 1 to 3 weeks बैक ना. मैं आपसे पूछूं ना कि दिसंबर के महीने में क्या आपका सोर थ्रोट हुआ था, तो आप भी सोच में पड़ जाओगे अच्छा हुआ था क्या, लाइक दैट. सो मोस्ट पेशेंट्स आर नॉट एबल टू रिकॉल दैट दे सफर्ड फ्रॉम illness 1 month back. And anyway, I mean, retrospective history of a patient may not be that correct. Okay, so I am looking at various options at the moment for hemorrhagic synovial fluid on a joint aspiration. देखो gout में तो जो होगा that would be turbid. So वो तो easy है, pick up करना easy हो जाता है, turbid ही present होगा. And then rheumatoid arthritis and reactive arthritis. तो reactive arthritis को Ritter syndrome बोलते हैं. And Ritter syndrome would again be a inflammatory. I mean इसमें inflammatory fluid present होगा. उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज होगी, उसमें फाइब्रिन प्रेजेंट होगा, बट उसमें ब्लड नहीं होने वाला. कभी भी ब्लड आया हो ना कहीं पर भी, तो या तो ट्रॉमा होता है, या फिर कैंसर होता है, या फिर वो ट्यूबरक्लोसिस होता है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन नंबर बी. बेसिकली क्या है कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ ब्लडी प्लूरल एफ्यूजन. मैंने तो आपको पढ़ाया हुआ ब्लडी प्लूरल एफ्यूजन इज सीन विद टीबी एंड इज सीन विद मैलिग्नेंसी. बट यहाँ पे मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया. इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्लडी प्लूरल एफ्यूजन आई सेड हेमरेजिक साइनोविल फ्लूइड ऑन अ जॉइंट एस्पिरेशन. लेकिन द पॉइंट इज स्टिल सेम कि हेमरेजिक कब मिलेगा, या तो ट्रॉमा में हो सकता है, या कोएगुलोपैथी हो सकती है, वारफेरिन टॉक्सिसिटी के साथ में प्रेजेंट हो सकता है कि भाई वारफेरिन किसी ने ज़्यादा खा लिया. बट अगर अगर मतलब ब्लड प्रेजेंट है तो मतलब आई जस्ट राइट कि कभी भी किसी एस्पिरेट में ब्लड प्रेजेंट है, इट कुड बी पेरिकार्डियोसेंटिसिस, इट कुड बी thoracocentesis, it could be ascitic fluid, it could be synovial fluid after trauma and coagulopathy. Two important causes that must be remembered for possibility of a blood being present is one is tuberculosis and second is malignancy. I mean that is the universal statement that I can say with respect to hemorrhagic fluid being aspirated. The correct answer for this one is option number B. I'm still getting in my chat as option number A. Gout में तो यार hemorrhagic नहीं होता ना, it's a turbid fluid which is present and that will be having negatively birefringent crystals. The correct answer for this one would be option number B. कोई बात नहीं यार, वो गलत सही तो रहता है, so it's never an issue. As I was saying, TB and neoplasia are always to be considered for any time there is a hemorrhagic fluid present. The hack to solve this MCQ was you have been taught that bloody pleural effusion is seen in TB and in lung cancer. Similarly here the same logic had to be used. चलो जी, अगले सवाल पे आते हैं. He says all are correct about gouty arthritis except. So let's look at this one guys. Gouty arthritis. I think one of the easier ones. यार वो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ना वो एंड आर्टेराइटिस करता है. टीबी जो डिजीज है ना, इट ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डैमेज टू द अल्ट्रा स्मॉल ब्लड वेसल्स. तो एंड आर्टेराइटिस की वजह से इट कैन कॉज आरबीसीज टू बी प्रेजेंट. सिमिलरली आई मीन दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट कि टीबी कॉजेज डैमेज टू अल्ट्रा छोटी ब्लड वेसल्स एंड आर्टेराइटिस व्हिच इज द रीजन फॉर दैट हेमरेजिक. सो राहुल दैट इज आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. एंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. Yes guys, this that I'm putting up is the last question for today. All of the following are correct about gouty arthritis except I am getting various feeds there. Like I could get last में feed आया common site of tophi. Tophi is a feature of chronic gout and usually ये cartilage वाले areas में मिलता है. And cartilage वाला area तो पिन्ना होता है, so that is okay. I mean we can get tophi in the pinna or we can get it on the in the hands of the patient as well. So D is a correct statement guys. He is saying except there. He is saying except there. So tophi can be present in cartilaginous areas also. So can be present in the pinna. It can be present in the hands of a patient also. Absolutely. यहाँ पर lead exposure increases uric acid levels. उसको saccharine gout बोलते हैं. That saccharine gout is itself an MCQ of previous years. That is जो wine drinkers होते थे उनमें gout develop हो रहा था. That is because of lead poisoning. So option number C is correct.
and then alcohol decreases renal excretion of uric acid. That is the reason why alcohol is a trigger. I mean, alcohol binge is a trigger. Like you would have always read that alcohol पीने के बाद में acute gout का attack start हो जाता है. So why that happens is because alcohol will compete with uric acid for excretion by the kidney tubules, and because of this competition the uric acid excretion would be hampered. But then gouty arthritis is always gonna be relatively more common in males as compared to females. The correct answer for this question would be option number A. And then manifestations, यार सूडो गाउट जो होता है वो तो नी जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा, और उसमें पॉजिटिवली बायरिफ्रिजेंट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे हम स्टेरॉइड्स को यूज कर रहे होते हैं. सो कंसिडरिंग दैट नी जॉइंट इज इन्वॉल्व्ड, there is birefringent crystals present, and we are using steroids for management. Those are the three main differences that you need to remember for pseudo gout, and compare that with acute gout at the moment. So for this question guys, it is the exclusion part that had to be worked up once again, and कोई बात नहीं. I mean, I had a varied response for this one as well. तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. Let's do one more, last one for today. मैं actually इसको last कर रहा था, but anyway, let's do another one. आपके रिफ्लेक्सेस थोड़े से टेस्ट हो जाएंगे. सोचो एग्जाम में दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट यू आर अटेम्प्टिंग, एंड यू हैव टू फोकस विद yes, alcohol causes an increase in uric acid, doctor. Yes, because it is gonna decrease the renal excretion. That is why the levels will rise. Alcohol is a trigger for development of alcohol binge, is a trigger for uric acid consumption. Okay ji. Okay. Yes, doctor, I am Dr. Chakrabarti. I am regularly doing these sessions. You can check out in the channel. Multiple other sessions have been conducted. Chalo ji. Let's look at the next one. Which of the following is correct about rheumatoid factor? Yes, guys. Quick comments, guys. Quick comments for diagnosis. RA factor can be okay. जैसे आया 90% सेंसिटिविटी फॉर डायग्नोसिस और रोमैटिक आर्थराइटिस. तो पहली बात तो ये रोमैटिक के डायग्नोसिस के लिए होता है या ये रोमैटॉइड के डायग्नोसिस के लिए होता है? तो ये तो रोमैटॉइड के लिए होता है. तो एक तो रोमैटिक और रोमैटॉइड में गलती नहीं करनी है. तो सी और डी तो वैसे भी नहीं बनता. और सेंसिटिविटी, यार इसकी सेंसिटिविटी तो नहीं होती है. इनफैक्ट दिस टेस्ट कैन बी फॉल्स पॉजिटिव इन 5% ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन. इट कैन बी 5% of normal population also. अब मैं तुम्हें भूत जैसे दिखाई दे रहा हूँ. So that can happen, you know. There could be a sudden power outbreak as well, though the internet is running so great. That is a ghostly session that I am conducting at the moment. Don't worry, the power supply will kick back in a while, but it's okay. चलो. Yes guys, I'm waiting for answers at the moment. You know, अगर अभी chat delayed है तो suddenly I'm gonna disappear from the screen, but मेरी आवाज़ें आपको आती रहेंगी. Yes, it can be BFP. It can be biologically false positive in 5% of normal population. You see, I am back guys. I am back as the power system kicks back into circulation. Yes, it is IgM antibody directed against the FC segment. And yeah doctor, it's raining. And it is IgM directed against the FC segment of immunoglobulin G. But the correct answer for this one is option number A, guys. This is again a very standard data, na? IgM, the rheumatoid factor is an IgM antibody directed against the FC segment of immunoglobulin G, and is present in about 70 to 80% cases of established rheumatoid arthritis. Sensitivity is only 50%, man. Sensitivity is only 50%. Yes. Only my mobile phone light is taking care of everything. So guys, it was really fun talking with you and interacting with you guys today. As I am back at the moment, and the correct answer for this one is option number A. So we are done for today. I'll be back with another schedule on my Telegram channel. I'll be posting the schedule for February, where whatever topics that I'll be covering, and on those days you guys can join in. Yes, Subhash Kumar, thank you so much for the kind words that you have given. And yes guys, my blessings are with you. You guys are gonna do excellent in your careers, and you are having the patience to come here and listen to me. That itself is fun. So great guys, thank you so much. And I'll be back. The schedule will be available on Telegram channel. Those who are new, you can go in the description of this video, and there's a Telegram channel mentioned there. And there also I keep on posting questions, so you can keep on attempting them. Telegram link, Lion King, is in the description of the channel. So God bless you guys. Take care. Bye bye.